Halogens. So in this section of halogens, we are first going to have a look that if these elements are accumulated in their pure forms, then how do they look like? What are the first hand impressions? पहली बार इनसे encounter करने पे, मतलब what precautions can be taken? So our first introduction is all about that, and uh, and to do that, uh, we are going to take a detour, a small detour, and uh, and in that I'm going to show you some first pictures and things about these elements. Okay, so here is a very beautiful view of all the elements uh, as far as we can, as far as we are able to gather them in sufficient amount. So going through the halogen part only, so this is the view of fluorine. Fluorine being the most dangerous non-metal, I should say, and the first member of halogen. Okay, and the element is actually reputed for deceiving the discoverers for a very long time. And whenever it was discovered and kept in any beaker, then the problem that everybody faced was that it used to react with the walls of the container itself. So as you can see here, that a perfect glass ampoule, ठीक है, has been corroded. उसके अंदर जो बीच बीच में हमें eroded glass के sections दिखाई दे रहे हैं, that is all because fluorine जो है that has reacted with strands, this inside walls of this glass bulb, and the various sections in which fluorine is used in our day-to-day life, and one of the biggest uses being Teflon. Teflon has been the part of our day-to-day life for so long now, okay, that life without it is actually almost unimaginable, and carbon and fluorine being the basic building blocks of this thing. And one example of the ore from which fluorine is extracted is actually fluorite ore. And so this is a brief description about fluorine. So after fluorine, which is slightly yellowish in color, okay, moving ahead to chlorine, which is actually greenish yellow, which is also a very reactive gas, but slightly less reactive than fluorine. Okay. Again, it is also gaseous. It is easier to liquefy than fluorine because of its heavier molecular weight. Okay. And some basic uses of chlorine, the color of pure chlorine liquefied chlorine. Okay. And calcium chloride being one of the most important minerals. Okay. And sodium chloride, the basic rock salt, literally, okay, as obtained from the Death Valley of USA. And to counter salt deficiency, okay, these sodium chloride blocks are actually literally given to animals. And moving ahead to bromine. So for bromine, we have, it is liquid, the brown liquid, okay, the thing famous, okay, for decolorization of bromine, brown color. And apart from that, bromine is actually used in a variety of substances to give some peculiar colors. And once again, one important mineral, okay, containing bromine obtained from Germany. Okay, iodine being the solid of this family, and the substance is actually easily sublimable. Okay, it is a violet solid, and on heating above about 115-16 degrees Celsius, it directly sublimes. So again, some basic uses of iodine.
iodine is used as antiseptic substances, as iodine tinctures. Higher concentrations of any of these halogens is actually poisonous. Okay, so this is an example of tincture of iodine. Okay, that in that you can see the peculiar color, since I2 as such is insoluble. So the color, the soluble form of this thing is actually due to triiodate ions I3 minus. Okay, so so these are some other forms of this thing. As you can see, the resublimated iodine for veterinary use as disinfectant. Okay, this has long been one of the substances that is used during infections and surgeries. So something that is used to treat goiter and iodine deficiency, and astatine being the radioactive substance. So again, this much about astatine is actually not very clearly known, and we'll move ahead to some further interesting demonstrations regarding these elements. And so I would like to make you go through some more visually appealing reactions one by one of all these elements. So first of all, checking out fluorine. So there are some reactions of fluorine. For example, this one is fluorine and steel wool, a mesh of steel, fine steel wires. Fluorine being so reactive that as soon as it comes in contact with anything, by anything, I actually mean even by air. So it attacks everything. Okay, fluorine is very, very reactive. The activation energy is very low. Okay, and the bonds of FF are actually not so strong. And the electronegativity is very high. Electron gain enthalpy is very much negative. Everything makes it actually a very potent electron grabber. So protein and charcoal. Charcoal being a perfect way that can be handled, that immediately reacts with fluorine. This is fluorine and iodine. This is an example of formation of interhalogen compounds. So this I2 immediately comes in contact with fluorine and converts to various iodine chlorides. And this one is for fluorine and sulfur. Sulfur being a yellow solid, and fluorine reacts immediately when it comes in contact with sulfur, forming various sulfur chlorides. And
again, this small piece is actually some information for bromine, skipping chlorine, it being a gas and slightly less reactive, but still pretty much reactive for normal standards, and jumping to bromine, bromine being the liquid. Now we should know that that in the trend of moving down the group, bromine has just occurred in liquid state. That means that it will still have pretty much high volatility. So This is bromine. It's chemically very similar to chlorine, except chlorine's a gas and bromine's a liquid. It also lets off a lot of nasty orange vapor, and this is why I sealed it in glass. Bromine's really dense, and it's more than 3 times as dense as water, and this makes its vapor really heavy. Bromine's notoriously difficult to store, and if I just put it all back into a bottle or something, it would damage everything around it. So I have to seal it again in a glass ampule that I made from a test tube. So for iodine, iodine is actually present in huge amounts in seaweeds and sea organisms. So the seaweeds actually, to prevent the attack from ozone, have actually evolved in this way that the iodine within them helps to control this thing. So this is an example of seaweed, and the ozone which is present in small quantities in our atmosphere, okay, actually damages these weeds. So previously, iodine was actually extracted by these seaweeds, and अगर हम इसे लेके इसे जो है क्रश करके properly chemically उसे treat करें, तो we can obtain sufficient amount of iodine from these things. Pure iodine solid के form में is actually a sufficiently hard substance, जो कि directly इस तरह react नहीं करता जैसे इसके previous members कर रहे थे, and जिसको हम लोग अगर थोड़ा सा effort लगाएं तो we can actually break it. So these are actually iodine crystals जो कि हमें इसमें दिख रहे हैं, and हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें the guy, courtesy to him, from which we have obtained these videos, has actually placed these iodine crystals in a beaker, and उसके ऊपर उसने एक spherical flask में ice cold water रखा है. On heating this beaker, iodine melts and immediately sublimes, and क्योंकि ऊपर जो है surface बहुत ठंडा है, तो as soon as these iodine vapors touches the upper surface, वहां पे immediately वो condense होकर crystals के form में convert हो जाता है. The crystals of iodine obtained on the surface are actually beautifully visible, and iodine is actually responsible for one of the most colorful things, and it is actually one of the most colorful halogens. Or although this is least reactive, but vapors of all these halogens are actually very very dangerous. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं the vapors are still emanating out. ठीक है, these all experiments should be performed, ठीक है, wearing a hood, a gas hood, gas safety hoods, and these are obviously not to be performed by anyone without proper experience and care. एक और हम छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं. दिस इज मेजरिंग ट्यूब के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले सबसे नीचे क्लोरोफॉर्म डाला है, ठीक है, उसके बाद में उसके ऊपर हमने पानी डाला है H2O, क्लोरोफॉर्म बीइंग हेवी देन वाटर बट इनसॉल्युबल इज एक्चुअली सेटल्ड डाउन, एंड उसके ऊपर हम लोगों ने एक्चुअली हेक्सेन लेयर C6 नॉर्मल हेक्सेन का सॉल्यूशन डाला है, द लिक्विड हेक्सेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल these three substances will form 3 separate layers, and अगर iodine डाल के उसे stir किया जाए, then this is the observation that we can see. The bottom most chloroform,
ठीक है, has dissolved sufficiently large amount of iodine. The middle water, ठीक है, जो बीच का लेयर हमें सेपरेट अब दिखाई दे रहा है, ठीक है, that being polar having H bonding is not able to dissolve and separate I2 molecules so easily. And hexane part में again solubility हमें दिख रही है that it is going on at least better than water. So after sufficient time अगर इसे properly stir करके छोड़ दिया जाए, then observation बहुत ही clear है that water में the middle one is actually least soluble, the upper one is actually slightly soluble, and the best part is the lower one. So again, iodine पानी में insoluble है. The solubility is so low that उसे पानी में insoluble ही बोलना चाहिए. And iodine की reaction, although Na2S2O3 solution के साथ बहुत famous है, and the reaction is used in iodometry and iodometry, and we must have all heard about this reaction, the hypo reaction. Apart from this, if we take small amount of iodine और हम उसे मोटार से क्रश करके so mixing this iodine and aluminium powder, iodine in powdered form and aluminium powder. So the reaction is actually very spectacular. If mixed evenly, a few drops of water are actually sufficient to start the reaction. And जो aqueous medium में जो थोड़ा सा बस एक बार इनको atoms को exchange करने का मौका मिल जाए, and once started, it is a self-sustained reaction. So the excess heat actually vaporizes the unreacted iodine also, and जो हम violet vapors देख रहे हैं actually pure iodine के है, and that actually covers this entire area. सब पे जो है एक yellowish tinge आ जाता है, that is iodine deposited. And iodine is actually very famous for such type of colorful reactions. One more very unique reaction of iodine is actually अगर iodine crystals को हम लोग ammonia के साथ react करवाएं. Ammonia is a gas, so if we manage ammonia in the form of ammonium hydroxide, NH4OH solution के form में अगर हम लोग उसको लेके आए, and if we make them react, then the reaction is as shown below, which we'll see in our normal course of reactions also. The compound Ni3 formed. Now, first of all, NF3, NCl3, Ni3, out of these three, although the compounds, all three compounds are unstable, they are not very stable compound, but Ni3 particularly is actually very, very unstable and is explosive compound. So the compound formed is actually Ni3. Ni3, if in wet form, is still manageable and stable. It is not so dangerous. But when filtered out, okay, and dried, then it becomes actually explosive. So on careful filtration and drying this, the first thing that comes to our mind is when can we try this at home? Okay, after reading this bonding. So it is a dried out sample is kept here of Ni3. Okay, and even a small touch from a wire is sufficient to actually set it ablaze. So we'll actually see this in a slow motion video like this. It actually immediately changes to N2 and I2, and then bond being very strong, and Ni3 was not energetically favorable. Since we have managed to obtain an I3, so it desperately tries to get separated in the form of N triple bond N and II. So these are some various things of this interesting element, and we'll actually move ahead with the boring part of the chapter, in which we'll learn, write, and simply cram the reactions. And
So let's go ahead with that. Okay. So coming back to our boring part, and in this we have these halogens, and as described in our textbooks, the word halogens actually means, halo means actually salt, and genes means actually origin. So these are actually representing the salt producers. As far as individual elements are concerned, मैं एक बार फिर से repeat कर देता हूँ, that fluorine is actually present in the form of many insoluble fluorides in nature. हमें ये किस किस फॉर्म में मिल जाता है? हमें ये फ्लोरस्पार के फॉर्म में मिलता है, फ्लोरस्पार, ठीक है. फ्लोरस्पार नेम हैज अ हिंट ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, जो उसके इनिशियल 4 लेटर्स हैं, दैट इज हैविंग अ हिंट ऑफ फ्लोरीन इन इट. This fluorspar is actually CaF2. That should not be confused. Okay, I don't know if I have warned you before or not to be confused with feldspar. With feldspar, that is altogether different mineral. Feldspar being K2O.Al2O3.6SiO2. So yes, fluorspar, cryolite. Okay, again, you must have heard this. You might have heard this in your previous classes in aluminum metallurgy, and the famous ore is actually Na3AlF6 and fluorapatite. Fluorapatite, which is again the formula of which is given in your textbooks as CaF2.Ca3PO4 whole twice का thrice. So in combined form it may look different, but more or less empirically ये हमारे लिए formula है. So regarding chlorine, this is for fluorine. Regarding chlorine, it is actually present in abundance in sea water. ठीक है, जिसमें एक्चुअली NaCl अप टू 2.5% के आसपास बाय मास, ठीक है, हमको मिल जाएगा. एंड उसके अलावा सी वाटर में KCl और MgCl2 एक्सेट्रा के सोर्सेज भी रहते हैं. तो ऑफन ड्राइड अप सी वाटर में कार्नलाइट और फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. एंड फॉर आयोडीन, ठीक है, वी हैव marine life and seaweeds are rich sources, are actually rich sources of iodine. And in some seaweeds, the percentage of iodine can be as high as 0.5% for one single element. Okay. And apart from that, commercially, it is being extracted from salt deposits in Chile. So the common name given to Chile saltpeter, Chile saltpetre or Chile saltpeter, okay, is actually pronounced in 2 different ways, but it is actually one and same thing, and it has up to 0.2% of NaIO3. And again, you should know this, that there is one more thing. Indian saltpetre, and this is KiO3. Chile saltpetre is actually NaIO3 and Indian saltpetre is actually KiO3. So apart from all these things, electronic configuration हम जानते हैं for them is actually NS2NP5, ठीक है, and atomic and ionic radii, we know that
atomic and ionic radii on moving down the group, it increases. This increases on moving down the group. And ionization enthalpy. Again, we know ionization enthalpy have very high values of IE. They all have very high values of IE. Okay, and it decreases down the group. Decreases down the group. Okay, and electron gain enthalpy. Okay, or rather electron affinity minus electron gain enthalpy. Okay, we know this fairly well that for fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine, the expected value for electron gain enthalpy was F is more than Cl is more than Br is more than electron affinity. For electron affinity is F is more than Cl is more than Br is more than I is more than 80. But due to extremely small size of fluorine, fluorine is not able to liberate that much expected energy. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन खाने के बाद में स्मॉल साइज में हल्का सा p ऑर्बिटल में रिपल्शन होने की वजह से, ठीक है, द हैप्पीनेस ऑफ फ्लोरीन is actually not as much as expected. So it slips down the ranking order and comes after क्या? And it comes after chlorine. एक नीचे shift हो जाता है, and so the correct order is actually Cl is more than F is more than Br is more than I is more than 80. Is more than 80. ये हमारा order है, ठीक है. And regarding electronegativity, उसमें हमें मालूम है कोई exception नहीं है, and the answer is F is more than Cl is more than Br is more than I. Regarding bond enthalpy, तो bond enthalpy या bond energy, तो we know that bond strength is actually proportional to inversely proportional to size of element, size of atom. Stronger will be the bond, jitna chota atom hoga, smaller is the atom, ठीक है, stronger will be the bond. And so for fluorine, chlorine, bromine, iodine, expected bond energy order क्या था भाई? Expected bond energy order है F2, Cl2, Br2 and I2 में F2 is more than Cl2 is more than Br2 is more than I2. But again, for F and F, we must have heard this concept also, this point also, that since both the atoms are of second period, both the atoms are of second period, and they are having 3 lone pairs each, and the bond is one single bond. So the bond is not strong enough to withstand the overwhelming repulsion of lone pairs between 2 F atoms. And so the bond energy again drops, and fluorine actually again slips in this ranking order. And now experimentally, it is found that this that the value of bond energy is actually after bromine. So the correct bond energy order is Cl2 is more than Br2 is more than F2 is more than I2. So regarding appearances, we know that F2 is actually slightly yellowish gas. Cl2 is actually greenish yellow gas. Br2 being actually brown liquid, and I2 being actually violet solid. So 2 things can be discussed. First of all, the increasing intensity of color. The increasing intensity of color.
the increasing intensity of color is actually due to color of any substance is generally due to the energy of visible light being absorbed by certain electrons, they getting excited to certain higher uh, excited state, and then these electrons returning back to ground state and again emitting colors which actually in visible region fall in visible region. Now things are not as simple as shown here, but all we can say is that the intensity of color increases because uh, the gap between HOMO and LUMO, the gap between HOMO, that is highest occupied molecular orbital, highest occupied molecular orbital, okay, which is having electrons actually, which is having electrons, and LUMO, the lowest unoccupied molecular orbital, lowest unoccupied molecular orbital. See, obviously, LUMO will be above HOMO. LUMO is the lowest unoccupied molecular orbital. That means इससे ऊपर सारे ऑर्बिटल्स अनऑक्यूपाइड है, ये सब के सब एम्प्टी हैं. इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में से ये जो है ये बॉटम मोस्ट है, बॉटम मोस्ट है, लोएस्ट है अमंग दीज एम्प्टी, ऑफ लोएस्ट एनर्जी है अमंग दीज एम्प्टी ऑर्बिटल्स. इसके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जंप करते हैं और वापस नीचे जो है जंप करते हैं, तो ये एक्चुअली क्या होता है, विजिबल लाइट की रेडिएशन एमिट करता है. तो गैप बिटवीन होमो एंड लूमो, HOMO and LUMO is decreasing on moving down the group, on moving down the group. Okay, and so it is getting, and because of the less gap, okay, the photons liberated while de-excitation, okay, are actually completely lying within the visible region, and so the colors are getting more and more vibrant. ठीक है, एक स्मॉल फीलिंग हम इस बात की ऐसे ले सकते हैं कि होमो लूमो का मॉडल एक्चुअली एमओटी से आता है, तो हमने एमओटी F2 पे तो लगाई है, Cl2 Br2 I2 पे हमने एमओटी पढ़ी नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि उस पे एमओटी लगती नहीं है. तो जस्ट लाइक हाइड्रोजन के अंदर हम लोगों ने देखा था दैट ऑन इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सक्सेसिव ऑर्बिट्स में एनर्जी गैप डिक्रीज करता था. फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में जो गैप रहेगा तो सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में नहीं रहेगा. ठीक है, सेकंड और थर्ड ऑर्बिट में नहीं रहेगा, और थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट में वो गैप नहीं रहेगा. तो एज दिस गैप इज डिक्रीजिंग ऑन मूविंग अप, ठीक है, सिमिलरली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर दीज हैलोजेंस आल्सो, ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2p5 की बात कर रहे हैं, तो इसका जो होमो और लूमो है उसके बीच में गैप ज्यादा है एज कंपेयर टू 3p5 के केस में जो होमो लूमो बनेगा, एंड सो ऑन. ठीक है, तो सिंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इंक्रीजिंग, सो द गैप इज डिक्रीजिंग. एंड सेकंड थिंग रिगार्डिंग the gas liquid and solid thing, so we can clearly say that as molar mass increases, the van der Waals forces, the intermolecular dispersion forces, the induced dipole forces, induced dipole force between molecules, between X2 molecules becomes stronger. As molar mass increases, the induced dipole force between X2 molecules becomes stronger. ठीक है, so this is the reason that दो F2 के बीच में
जो एक्चुअली फोर्स लग रहा है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली a bit weaker than those Cl2 जिनका मास इंक्रीज कर गया है, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करता जाएगा, द ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीजेस, ठीक है, एंड ऑन मूविंग डाउन, ठीक है, इनको बॉयल करना, इनको मेल्ट करना मुश्किल होता जाएगा. So on moving down, boiling point and melting point increases. So F2 and Cl2 are already in boiled state, इसलिए वो gases हैं. Bromine और iodine क्या है? Liquid solids में convert हो गए. So these are some basic properties. It's fine. Okay. Regarding chemical properties of halogens. So for chemical properties, fluorine, chlorine, bromine, and iodine all exhibit -1 oxidation state. All exhibit -1 oxidation state. Whereas the whereas the lower three members are also known to exhibit +1, +3, and +5, as well as till +7 oxidation states. So there are two aspects that need to be discussed, which you must be aware of. First, +1 oxidation state cannot be shown by fluorine, as fluorine is most electronegative element. So any metal or non-metal, or for whatsoever we can say any element with which it combines, it is not possible for the electron to reside for majority of time with A. So F will be given a -1 charge and A will be given a +1 charge. The only element that can stop fluorine is fluorine itself. So F2 के केस में चार्ज 0 है, इसके अलावा F का चार्ज हमेशा -1 है. And regarding higher valencies, तो unavailability of d orbital actually prevents excitation of electron and increase in valency of fluorine, which is possible in lower halogens. So for every NH2 NP5 configuration, we have a empty ND available. So in all these cases, chlorine, bromine and iodine, this is happening, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड एक empty D लगा दिया जाए तो जो है ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जो है वो इसमें आ जाएगा. तो इसकी वैलेंसी जो अभी 1 है, कोवैलेंसी जो 1 है, वो इंक्रीज करके सडनली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से 3 हो जाएगी, और अगर एक और जंप करवा दिया जाए तो सडनली इंक्रीज करके 5 हो जाएगी, एंड सो ऑन, और लास्ट खोल दिया जाए तो 7 हो जाएगी. सो फ्लोरीन में वो डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होने की वजह से एक्साइटेशन करके अनपेयरिंग करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है. वन मोर थिंग, F2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन. ये बात भी हम अच्छे से जानते हैं. F2 is the strongest oxidizing halogen. Strongest oxidizing halogen. In fact, one of the strongest oxidizing agents. Okay. And as we move down the group, the oxidizing power actually decreases. Oxidizing power decreases. F2 is more than Cl2 is more than Br2 is more than I2. इसमें कहीं कोई exception नहीं है, without exception. Oxidizing strength decreases without exception. Bond energy में exception था, electron affinity में exception था, इसमें exception नहीं है. As is evident from the data of E0 X2 X minus of all these elements. For fluorine, the data is 2 plus 2.87. ये इसका desperation है F minus में convert होने का. For chlorine, it is actually 1.36
plus. For bromine, it is plus 1.09. And for iodine, it is plus 0.54. In fact, iodine is so less powerful. I2 is so less powerful, that many decent oxidizing agents are able to convert I minus back to I2. वो I minus से छीन के वापस I2 में से कन्वर्ट कर सकते हैं, and I2 is not able to do anything about it. The few honorable examples to depict this is, see, कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो थोड़े डिसेंट ऑक्सीडाइजिंग पावर वाले हैं. तो फॉर एग्जांपल जैसे पी ब्लॉक में आते हैं, तो पी ब्लॉक में क्या है कि लास्ट एलिमेंट्स पे इनर्ट पे इफेक्ट लगता है. तो फॉर एग्जांपल बोरॉन फैमिली में थैलियम, तो +1 और +3 में थैलियम +3 में अगर रहेगा तब फिर वो बहुत पावरफुल है. कार्बन फैमिली में लेड, तो पीबी अगर +4 में रहेगा तो बहुत पावरफुल है. सबका हायर वैलेंसीज. तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, थैलियम +3, पीबी +4, bismuth +5, etc. easily tear apart iodide I minus. So there is no such thing as TL+3 and I-1. TLI3 exist नहीं करता है. यहाँ मैं ऐसे बोलना चाहिए, I should change my language, that TLI3 does not exist in this form. ऐसे नहीं exist करता है. In fact वो actually दूसरे form में exist करता है, like this. ठीक है, तुम्हें फॉर्मूला मिल जाएगा TLI3, but the compound is actually TL+1 and I3 as a whole -1. That is triiodide ion. I'm sorry. Thallium +1 में है. Thallium is not furious, is not monstrous in this case. ठीक है. TLI भी एग्जिस्ट करेगा, TLI3 भी एग्जिस्ट करेगा. TL+3 के साथ में नहीं बैठ सकता. सिमिलरली लेड के साथ में, तो Pb+4 के साथ में I- एग्जिस्ट नहीं कर सकता. There is no such compound as PbI4. As a matter of fact, PbBr4 also doesn't exist. ठीक है. In fact, so much so that even without the inert pair effects, ठीक है, if I actually I think I'm repeating this information, that the copper ion Cu+2, ठीक है, if tried to combine with I-, it immediately reduces. It immediately is reduced, and I- is oxidized to form Cu+1 plus I2. Cu+1 plus I2. And the same happens with Fe+3. Fe+3 plus I- gives Fe+2 plus I2. So these are some examples जहाँ पे iodine cannot withstand the onslaught of the oncoming oxidizing agent. So the reason for this thing, for the above order, can be explained on the basis of a Born-Haber cycle. Born-Haber cycle, एक जनरल Born-Haber cycle अगर मैं हेलोजेंस का ड्रॉ करूं फॉर E0 X2 से X minus aqueous, तो इट कैन बी सीन दैट X2 गैशियस फॉर्म में है, जिसको हम लोग पहले तोड़ रहे हैं X गैशियस फॉर्म में, जिसको हम लोग फिर लेके जा रहे हैं X माइनस गैशियस फॉर्म में, और X माइनस को फिर हम लोग लेके जा रहे हैं X माइनस एक्वस फॉर्म में. ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन जो है ये एक्चुअली यहां से यहां जाने का हो रहा है. सबसे पहले तो दिस फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली, अच्छा बैलेंस कर दिया जाए तो हाफ X2. दिस फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली हाफ टाइम्स delta H BDE. This is delta H electron gain enthalpy, and this is delta H of hydration enthalpy.
तो मेरे पास जो E नॉट आएगा वो डेल्टा H नेट पे डिपेंड करेगा, एंड दिस डेल्टा H नेट is actually equal to half delta H BDE plus delta H EGE plus delta H hydration enthalpy. As you can see that on moving down the group, देखो पहला स्टेप कैसा है, एक्सो की एंडो, बॉन्ड तोड़ना एंडोथर्मिक स्टेप है, आई एम सॉरी एंडोथर्मिक स्टेप है, इसमें एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ फेवरेबल स्टेप, जितना ज्यादा एंडो होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो रिएक्शन लेस फेवरेबल होता जाएगा। सेकेंड स्टेप कैसा है, दिस इज एक्चुअली एक्सो, एंड थर्ड स्टेप कैसा है, दिस इज एक्चुअली एक्सो। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में लेट्स से हम स्पेसिफिकली फ्लोरीन का केस डिस्कस करें, तो फ्लोरीन का बॉन्ड सपोजिटली स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए था, बट F2 ड्यू टू लोन पे रिपल्शन, ठीक है, हैव सफिशिएंटली लो BDE, इट इज जस्ट अबव आयोडीन, तो F2 हैज वेरी लेस BDE। इसका मतलब उसका इन्वेस्टमेंट जो है इस रिएक्शन के अंदर, जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, वो हमारा बहुत कम है। एंड EGE की बात करें तो इट इज जस्ट बिहाइंड क्लोरीन, जस्ट बिहाइंड क्लोरीन। तो अगर वो जस्ट बिहाइंड क्लोरीन है तो इसका मतलब उसका सफिशिएंटली हाई वैल्यू ऑफ सफिशिएंटली हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, तो सफिशिएंटली हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है दैट इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज जो कि सबका सेम है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज जो कि फ्लोरीन का सबसे कम है। तो दिस इज मोस्ट एक्सो फॉर F माइनस। तो तीनों कॉम्बिनेशंस F माइनस के इस तरह एड अप होते हैं दैट F फ्लोरीन बिकम्स द मोस्ट रिएक्टिव रिएजेंट, सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करने वाला एलिमेंट बन जाता है, राइट। तो these values are the reason, ऐसे एक और रिएजेंट के साथ में इसकी रिएक्शन अगर हम डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल विद कॉन्ग H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में इसकी रिएक्शन में, हम कॉन्ग H2SO4 के बारे में तीन चीजें बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, आई गेस सबको पता है वो तीन चीजें। थ्री थिंग्स दैट वी नीड टू लर्न अबाउट कॉन्ग H2SO4 इज, नंबर वन, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, नंबर टू, इट इज माइल्ड, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड नंबर थ्री, it is dehydrating agent, so अब अगर मैं रिएक्शंस एक एक करके सबके साथ करवाऊं, फॉर एग्जांपल आई यूज अ सॉल्ट KF या CaF2 as a matter of fact, the name of the mineral is, I guess you must be knowing this, plus H2SO4 conc, ठीक है, KCl plus H2SO4 conc, KBr plus H2SO4 conc, and Ki plus H2SO4 conc। तो अगर मैं ये चारों रिएक्शंस जो हैं इनको जो हम करवा के देखते हैं, now before we attempt the answers of all these problems, or you might be knowing the answers of all these problems, we should know that what is who is fighting whom and for what the fight is being pursued. So these things, F minus, Cl minus, Br minus and I minus are actually holding electrons. They are holding electrons. And sulfur, since it is in concentrated state, so +6 is actually in look, is actually out for hunting out for electrons. So if
If the prey is weak enough, then it can be hunted by S+6 and the electron will be grabbed, and the reaction will look somewhat like that sulfur +6 is going to go down from +6 to +4 and SO2 gas is going to be released. Okay, if redox happens. Okay, and if the redox doesn't happen, then the only outcome can be that the Cl minus just changes cations and it is attached with the H plus of that thing. So HCl might be released. For example, starting with KCl. So we are here with a small YouTube demonstration, and here we are. And so we have some list of observations. First of all, potassium chloride is used. Chloride. Make a note of any changes. So a gas is being evolved and we are not sure which gas is it. So there are The two ways. full range indicator paper tests the acidity of any gases given off. So as soon as Ammonia gas is used as a test for hydrogen halide gases. so these few observations are actually quite evident to show that the thing that is being observed here is actually a HCl gas plus KHSO4 and K2SO4 substances are being formed. So this is a non-redox acid displacing another acid reaction. Now, I can't say that it is strong acid displacing another weak acid solution, because technically speaking, HCl is stronger than H2SO4. So it is actually a reaction that needs to be remembered, because in this, it is not the strength of acid that is making this change happen, but it is rather the volatility of acid. So this thing is actually sort of in an equilibrium, and it is more like more volatile acid. Which acid is more volatile? HCl. Is being replaced by, is being pushed out by less volatile acid. That is the comment that should be written in front of it. And the reason for volatility is actually H bonding. Hydrogen bonding is the reason for volatility. Hydrogen bonding is HCl may absent and H2SO4 may it is present. So entropy sort of is our basic driving force of this thing. So again, moving ahead with KBr. So for KBr, the thing will look somewhat like so this is with potassium bromide, and with potassium bromide. Make a note of any changes. Skipping the entire sequence, we can clearly see that the color of the gas being evolved is actually light reddish to reddish brown as concentration changes, which clearly indicates that it is Br2. Because if HBr would have been evolved, then the color would not have The been. same set of chemical tests was carried out. So from this observation, we can say that Br2 was formed. So bromine got oxidized. So this is clearly a redox reaction. And so something is supposed to be reduced. So sulfur is reduced. And so please be extra careful that KHSO4 is one of the products formed along with SO2. That is very, very important. That SO2 gas is released along with Br2 gas. Since SO2 is colorless, so the color of SO2 is not visible in the mixture of the Br2 and SO2 gases evolving from this test tube. Now coming
back to the third test, iodine, and we can easily see that if iodine is further less powerful than Br minus, then certainly iodine is going to be released. And so the observation is quite evident. And this is, I guess, potassium iodide. Make a note of any changes. And as soon as it comes in contact, the reaction is vigorous, everything is changing very fast, and iodine has filled this entire test tube. The color in is the observation of color is inescapable, and no more tests for this are required. So it is again I2 plus SO2. These are the main reactants. Rest all will be spectator ions. So for KCl, now we know the product. So for KF or CaF2, we can clearly say that since F minus is a better holder of electron, so it is not possible for conc H2SO4 to extract electron from F minus. So product is going to be certainly non-redox, and we can easily say that it is strong acid displacing weaker acid, because clearly H2SO4 is far more stronger and far more viscous. I mean, HF is far less volatile, far more volatile, I'm sorry. So HF plus KHSO4, K2SO4 is the answer. Okay. So apart from these reactions, what we need to focus on is one more part. See, we are going to study one by one reactions of these halogens with H2O, H2, with all other reagents, etc. So first of all, the reaction with water. So first of all, reaction with water. So with water, fluorine being so much in need of electrons that it attacks water and undergoes a redox reaction, thereby stripping oxygen, because H plus से तो देखा possible नहीं है, तो O-2 को tear apart करके उसमें से इलेक्ट्रॉन खा के it actually changes itself to HF and liberating O2 in this process. Oxygen is, ठीक है, देख के एकदम मतलब हालत खराब है बेचारे की, फट गई है, and he's like, oh my god, ठीक है, ये क्या जानवर है भाई. अब अगर इसी चीज में हम लोग अगर Cl2 डाल देते हैं with chlorine, ठीक है, chlorine, bromine, iodine, ठीक है, all these things are not able to oxidize water as such, because O-2 से निकालना इनकी बस की बात नहीं है. तो इन केसेस में क्या है, Cl2 और Br2 दोनों ही में जब पानी में डालते हैं तो all they can do is they actually attack themselves and disproportionate redox वो भी है, redox ये भी है, but they are not touching water. इसमें water oxidize नहीं हो रहा है. So the disproportionate into HCl मतलब HX plus HOX, ठीक है, X minus 1 और OX मतलब X plus 1 basically. And iodine fails to react with water. Iodine is practically insoluble in water. पहले तो react ही नहीं कर पाता है, ठीक है, insoluble and no reaction. In fact, the reverse can be held as true. That अगर मेरे पास में suppose I minus होता, तो I minus जो है वो जरूर क्या कर लेता है बताओ, I'm sorry, I minus जो है वो जरूर O2 से रिएक्ट कर लेगा. ऑक्सीडाइज करना तो बहुत दूर की बात है, खैर तो ClBr भी नहीं कर पा रहा है, O2 से रिएक्ट कर लेगा I minus, और एसिडिक मीडियम में O2 से रिएक्ट करके it actually forms I2 and H2O सेपरेट आउट हो जाएगा. तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल है.
और तो बहुत दूर की बात है। तो अपार्ट फ्रॉम वाटर, ठीक है, one obvious reaction is reaction with hydrogen. So for reaction with hydrogen with H2, we know that H2 reacts with F2, Cl2, Br2 and I2. ठीक है, तो इन सबके साथ में क्या है, it actually reacts pretty easily, ठीक है, forming these things HF, HCl, HBr and HI. So the ease of reaction, obviously, the ease of this redox reaction, ठीक है, the speed of the redox reaction actually decreases, the ease decreases on moving down, but हमें actually ये बोलना नहीं चाहिए, because ये चारों ही इतना easily react करेंगे that उनके अंदर ये बोलना, ठीक है, कि somebody is not so eager to react with H2 is actually false. But still relative rate का order ये रहेगा. The strength of acid हमें मालूम है कि इसके अंदर जो है bond strength मैटर करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं. So according to Ka, Hi being the strongest acid, HBr being उससे कम, HCl उससे कम और HF उससे कम. रिगार्डिंग एक बात और इनकी डिस्कस कर लें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हम शायद केमिकल बॉन्डिंग में इस चीज को देख चुके हैं कि HF, HCl, HBr, HI में, ठीक है, there is a small issue with HF. This having H bonding is actually having a different order of melting and boiling point. तो बाकी तीनों के अंदर क्या है, मोलर मास इज द डिसाइडिंग क्राइटेरिया. जितना ज्यादा मोलर मास उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो दोनों का ऑर्डर ये निकल के आता है. बट HF के लिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही अनयूजुअली ज्यादा है बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग. तो H बॉन्डिंग की वजह से फिर ये अपने ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है एंड ये HBr से जस्ट नीचे और HI के ऊपर जाके बैठ जाता है इन टर्म्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए उसके नीचे जाके बैठ जाता है. ठीक है, अगर मैं सारे H बॉन्डिंग के केसेस को साथ में डिस्कस करूं तो यू शुड एक्चुअली रिमेंबर दिस इन, देखो इन दिस वे, NH3H2OHF, इन तीनों के अंदर H बॉन्डिंग होती है. तो नाइट्रोजन PH3, ASH3, SBH3, BiH3, H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO, ठीक है, लीविंग असाइड द लास्ट एलिमेंट्स, ठीक है, मतलब वो रेडियोएक्टिव थोड़ा सा इशू करते हुए, और HCl और HBr और HI. तो अगर मैं सब में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखूं, तो इन तीनों में H बॉन्डिंग होने की वजह से, दे एक्चुअली डिस्टर्ब नॉर्मल ट्रेंड. तो NH3 का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाता है, ठीक है, बट बॉइलिंग पॉइंट में अब देखो वो एक्सेप्शन कहां पे जाके गिरेगा ये तो हम जानते नहीं है. बॉइलिंग पॉइंट पे इट फेल्स टू क्रॉस स्टिबीन एंड ASH3 के नीचे जाके रुक जाता है. शायद पहले डिस्कस हुआ होगा ये. तो इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन तीनों में सब में वही ऑर्डर रहेगा भाई, लास्ट में इनमें सब में वही ऑर्डर रहेगा. वाटर में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही की वजह से इसका H बॉन्डिंग से दोनों ही इसका हाईएस्ट हो जाता है. और HF में तुमने देखा अभी HBr के ऊपर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट HI के नीचे चला जाएगा. मेल्टिंग पॉइंट HI के ऊपर और बॉइलिंग पॉइंट HI के नीचे. तो एक ऐसा सिमेट्रिक सा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है ऐसे, ठीक है. अच्छा, तो रिगार्डिंग दिस, आफ्टर दिस रिएक्शन विद H2, ठीक है, लेट्स कम डाउन टू रिएक्शन विद O2. Number 3 is reaction with O2. Reaction with O2. So halogens form many oxides with O2, ठीक है, but most of the oxides are unstable. Most of oxides of halogens are unstable.
Most of them are unstable. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की जो है दो ही ऑक्साइड्स बनती हैं, OF2 और O2F2, जिसमें F का तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही बोला जाएगा, तो OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा भाई, +2, और O2F2 में क्या हो जाएगा भाई, +1. तो दिस बीइंग OF2 -1 -1 +2, और O2F2 F and F -1 -1 +1 +1 O2F2. ठीक है, तो दीज ऑक्साइड्स जो हैं, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स हैं. दीज ऑक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स. इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, इस बात का हिंदी में मतलब ये है कि ये रैंडम चीजों पे, ठीक है, दे ट्राई टू get rid of the fluorine present within themselves. They try to get rid of fluorine and attach it on other things. भाई एक तो बात दिखने से ही शुरू से समझ में आ रही है कि इन सारे एटम्स के ऊपर लोन पेयर्स हैं, और इन सब के ऊपर जो लोन पेयर भर भर के प्रेजेंट है, ये सब चीजें क्या हैं बताओ, ये इन सब बॉन्ड्स को बहुत ही अनस्टेबल बना रहा है. सो अपना फ्लोरीन निकालने के चक्कर में ये एक्चुअली रैंडम चीजों से रिएक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, वन सच थिंग इज दैट O2F2 oxidizes plutonium to PuF6. O2F2 प्लूटोनियम से रिएक्ट करके इसे PuF6 में कन्वर्ट करता है और खुद O2 बन के भाग जाता है निकलते समय. ठीक है, थैंक गॉड जान बची. ठीक है, so this PuF6 formed is actually a highly volatile substance, and the reaction is used to actually, as mentioned in your textbooks, this is used to remove plutonium as PuF6 from spent nuclear fuels, which has its uses as, because if you want to use plutonium in some other parts, then you need to extract it, and plutonium being the neutron emitter in many cases, you need to extract plutonium so that the rods, ठीक है, के अंदर का जो रिएक्शन है, that can be manipulated, that can be controlled in some other ways. जो spent nuclear rods to remove Pu from spent nuclear rods, nuclear fuel rods. तो कैसे यूज करते हैं इसका, वो तो चलो एक अलग बात है, पूरा सेपरेट सेक्शन है, बट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स. ठीक है, तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन एक्चुअली फॉर्म्स वेरियस ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिंग फ्रॉम +1 to +7. ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड, experimentally due to kinetic and thermodynamic factors, lead to this observation, that the general stability of oxides, it is found that general stability of oxides is in the order, iodine is more than chlorine is more than bromine. ठीक है,
एंड ऑल्सो एक तो बात ये, अब तुम बोलो कि भाई आयोडीन सबसे पहले क्यों, और फिर ऑर्डर रेगुलर क्यों नहीं है, ठीक है, बी आर लास्ट में क्यों? तो उसी के लिए यहाँ पे देखो लिखा है कि काइनेटिकली और थर्मोडायनेमिकली चीजें जो हैं वो चेंज होते होते इस ऑर्डर पे आके जीरो इन हो गई हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे थर्मोडायनेमिक फैक्टर किसी को सपोर्ट कर रहा है, कहीं कहीं पे काइनेटिक फैक्टर किसी को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हो गया है, राइट, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और इसमें भी there is this fact that the higher oxidation states of halogens tend to be more stable with oxides than the lower ones. That generally the higher oxidation state oxides tend to be more stable, than lower ones. अब यहां भी हमें क्या है, डाउट आता है कि ये कैसे हो सकता है सर, ठीक है। तो इस बात का जवाब ये है दैट हम लोग क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है, एक्चुअली क्या है, आयनिक कंपाउंड की तरह ट्रीट करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +7 है तो इसका मतलब क्या है कि हैलोजन में से एक एक करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कोई लेके भागा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। वी शुड नो दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट एक्चुअली चार्ज, ये रियली चार्ज नहीं है, ठीक है। rather we should think it in this way that oxidation state के अंदर क्या है, we should think in this way कि ऑक्सीडेशन स्टेट में भाई जितने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम लोग चल रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में, उतने ज्यादा हमारे पास में क्या है, बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो HiO4 के अंदर मेरे पास में क्या है बताओ, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और OH बना हुआ है। सो मोर आर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स एनर्जी लिबरेट करते हैं फॉर्मेशन पे, ऑल बॉन्ड फॉर्मेशन लिबरेट एनर्जी। तो more covalent bonds means more energy has been liberated. More energy has been liberated to form these compounds. Liberated to form these compounds. Not that हम हमेशा ये बोलेंगे, ठीक है, बट एटलीस्ट फॉर दिस केस जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आ रहा है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। I'm again repeating, it is not +1 और +7 चार्ज जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो क्लोरीन ऑक्साइड्स आर हाईली रिएक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड टेंड टू एक्सप्लोड, मतलब ये सबके सभी अनस्टेबल हैं। ClO2 is used as bleaching agent for paper pulp and textile and water treatment. क्लोरीन का ब्लीचिंग की काम में जो 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 उसका रोल है, जगह जगह उसका एप्लीकेशन है। तो ClO2 is used as bleaching agent for paper pulp, जो तुम्हारे पास में पेपर का, वुड पल्प से बनाए हुए पेपर का प्योर व्हाइट कलर नहीं होता है, तो उसे एकदम परफेक्ट व्हाइट बनाने के लिए हम जो केमिकल प्रोसेस करते हैं, ठीक है, दैट इज वन सच थिंग फॉर पेपर पल्प, टेक्सटाइल and water treatment, ठीक है। whereas bromine oxides are least stable, ठीक है ना, हमने ऊपर देखा था भाई, याद है ना भाई, ICLBr, they are least stable, ठीक है, and exist only at low temperatures, सबके सभी जो हैं वो बहुत ही अनस्टेबल है। तो आयोडीन की जहां तक बात है तो I2O4 ऑक्साइड्स बनते हैं, देखो I2O4, I2O5, I2O7 are insoluble solids
are insoluble solids. Insoluble solids and decompose on heating. Decompose on heating. Fine. So these are the reactions with oxygen. ठीक है, जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल I2O5 की एक रिएक्शन डिकम्पोजिशन की जो हम देख सकते हैं, दैट लुक समवॉट लाइक दिस. That looks somewhat like this. Okay, yes. So this is a white crystalline powder. This iodine oxide is the anhydride of iodic acid. When heated to 300 degrees Celsius, it decomposes into elemental iodine and oxygen. On heating, this quickly decompose into I2 and O2. And this is the case with all iodine oxides. And such is the stability of all halogen oxides in general. As iodine pentoxide is the anhydride of iodic acid, it forms iodic acid when reacting with water. Okay. So these are some reactions of halogens with oxygens, and we'll start with preparation and some more reactions of each element one by one from next class. Okay, thanks a lot. Good day.